Hello guys, welcome to Books Amaze. My name is Apni and today is a very special video for you as well as for me. I would say most importantly for me क्योंकि जब से मैंने ये चैनल शुरू किया तब से ऐसा एक वीडियो बनाना मेरा सपना था and finally today is gonna come true. So today I'm gonna be arranging my bookshelf with you all. This is my bookshelf. I'm gonna show it to you in a minute. तो यहाँ पर मेरी सारी बुक्स रखी हुई हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने रिसेंटली लिए हैं, कुछ शो पीसेस हैं जो मैं इस बुक शेल्फ में लगाना चाहती हूँ. लेट मी शो यू ऑल द बुक्स दैट आर लाइंग अराउंड हियर. ये कुछ बुक्स हैं, यहाँ पर प्लांट्स हैं एंड यस दैट्स द बुक शेल्फ बिहाइंड मी. ये एक काफ़ी सस्ता सा बुक शेल्फ मुझे मिल गया था, वॉलमार्ट से मैंने इसे लिया है. And सस्ता एज इन दिस इज़ ऑल्सो फॉर $80 बट ट्रस्ट मी इट्स क्वाइट सस्ता हियर बिकॉज यहाँ पर बुक शेल्फ जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, वो 150 से स्टार्ट होते हैं. बट आई डेंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच. और ये एक थोड़ा एसीमेट्रिकल टाइप का बुक शेल्फ मैंने लिया है. मुझे ऐसा ही कुछ लेने का मन भी था, मुझे वो जो प्लेन से बुक शेल्फ होते हैं वो लेने का मन नहीं था. एंड आई वॉन्टेड ओपन डोर्स, मुझे कुछ यहाँ पर ग्लास नहीं चाहिए था. एंड आई वॉन्टेड अ वाइट बुक शेल्फ दैट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे वाइट बुक शेल्फ ही चाहिए. मुझे कई सालों से चढ़ा हुआ था. जब से मैंने थोड़ा होम डेकोर और ये सब चीज़ें देखना शुरू किया, जब से मेरी शादी हुई, as soon as I became an adult, I started, decorating my house and all of that. I wanted a bookshelf and I wanted a white bookshelf. I was very sure about it. And recently we have moved to Florida from New Hampshire. It's like almost a cross country move. हम लोग बिल्कुल north से south में move हुए हैं. So we have been buying new furniture, selling old furniture, and I thought let's invest in a new bookshelf now. पहले मेरे पास सारे पुराने से bookshelves थे या पुरानी सी जो शेल्फ्स थी उनको मैंने बुक शेल्फ की तरह यूज़ किया था. बट आई वांटेड अ प्रॉपर वाइट बुक शेल्फ, तो मैंने ये बुक शेल्फ लिया है. और इसको हम बाद में एज अ टीवी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक अभी ये वर्टिकल है, इसे यदि हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इट कैन बी यूज एज अ टीवी टेबल एज वेल. सो बाद में यदि मैं कोई और बुक शेल्फ खरीदती हूँ तो मैं इसे एज अ टीवी टेबल या एज अ साइड टेबल भी यूज़ कर सकती हूँ. सो आई थॉट इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड $80 इज़ नॉट दैट मच, सो आई बॉट इट. एंड आई ऑल्सो हैव फ्यू बुक्स टू शो यू, क्योंकि कल मैं एक बुक स्टोर गई थी जो सेकेंड हैंड बुक स्टोर था जो मेरे घर से बहुत पास था. सो आई गॉट टू नो अबाउट इट. आई वेंट देयर एंड आई बॉट अ फ्यू बुक्स फ्रॉम देयर. ये सारी बुक्स हैं, तो मैं आपको ये बुक्स भी दिखाऊंगी और साथ ही साथ हम बुक शेल्फ भी जमाते जाएंगे. सो दैट्स अ बुक शेल्फ, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. Those are the plants and these are all the books that are gonna go here. That's my desk. That's a little messy. That's a string light that I got to hang up in my balcony and I still have to hang it. और ये मेरा journal, laptop, मेरी ऐनक, और that's my Kindle. But now it's time to focus on the bookshelf. Let me show you the books that I got from that second-hand bookstore. So the first one I got Perks of Being a Wallflower. I have already read this book and I guess reviewed it as well. पर ये बुक मुझे फ्री में मिल गई एक्चुअली. ये एक लॉट में थी जहाँ पर फ्री बुक्स थी. सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स पिक इट अप बिकॉज आई डोंट हैव दिस कॉपी. आई रेड इट फ्रॉम अ लाइब्रेरी कॉपी, सो आई जस्ट पिक्ड इट अप. इट्स अ वेरी सिंपल प्लेन कवर बट इट्स एकदम plain, एकदम कोरा, looks like untouched. So yeah, very good condition. Next one is a very interesting one. It's called Sherlock Holmes Rudimentary Puzzles and Enigmas. It's basically like a puzzle book, but it's so pretty. Look, and it has all of these puzzles to solve और last में इनके answers होते हैं and it just looked so pretty to me. Look at the covers. This was for $4. Then next up is A Man Called Ove. I haven't read this book. I've heard a lot about it and this was just for $2 and pretty good condition. Like there's no marks on it, looks like brand new. So yeah. And I guess the last one, no, the second last is Great Expectations, a classic one that I haven't read yet, and this was for $3, a hardcover. So yeah, pretty good one. And the last one is this.
I honestly just picked this up for its cover. I just did buy its cover. So yeah, looks such a pretty cover. It's called Frog Music, a novel by Emma Donoghue. I read the blurb of it, which looked quite impressive to me, quite fascinating. So I just picked it up. Again, very good condition. This was for, I guess, $3 or $1. Yeah, this was in the lot of $1. So such a pretty cover. Look at this pretty watering can. I just got this yesterday from Target for $5. And मैं काफ़ी टाइम से इसे ढूंढ रही थी. I have seen this on Instagram everywhere. And look how pretty it is. So it's gonna go there on top of all my white colored books. And let me show you some plants and planters that I recently got that I'm very excited about. So let me show you. This is a gift that I got from a friend. Then I got this cute little bicycle that's also like a plant stand. Let me flip my camera. This is also a little planter, an elephant planter. This was also a gift from a friend. I love it. And then this is a planter, a ceramic planter that I got from Target. Most of these things still have the tags on. And then this is a planter too. The planter is separate and the tulips were separate, but I thought they looked pretty together, so I bought them. And then I have this pot, which was also a gift from a friend, but I thought it would look very good here. And then I have few plants, like real plants. That's a pothos or money plant as we say it in India. And that's an ivy pothos. I have just put it in an owl planter that I really liked. I'm fascinated by owls. So yeah, that's the planter in there. See, small ivy plant. And then we have this snake plant. That's an actual real plant. And I have few other plants as well, but they are like resting in my living room. And then I have two frames. So in those frames, there are pictures of me and Anit, my husband. And I love this picture. That's like the very first picture of our together. This was clicked in 2013, I guess. Yeah. So yes, that's one frame that I really like. And there's another picture, but I might probably not put it up here. I'll just put one of them, this one. And then I also have like this box in which I have kept all the bookmarks. And then I have this another box. This is like all my paint supplies, all the paint brushes and acrylic colors and pencil colors. These are all for the time when I'm feeling anxious and I like to paint and I like to fill colors in my coloring book. So it's for that time. Alright, so it is all done, and let me give you a final look. You got it, you want your roller coaster. Don't ask me about my freedom.
So that was the vlog, guys. I can't stop looking at this beautiful bookshelf and let me know आपको कैसा लगा और इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए. ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम और बुक्स खरीदते रहेंगे, जो कि होता ही है, तो ये बुक शेल्फ बढ़ता जाएगा और इसमें मैं कुछ चेंजेस करती जाऊँगी. बट लेट मी नो फॉर नाउ हाउ डू यू लाइक इट. मेरे पास इतनी ही बुक्स हैं जितनी हैं, उनको मैंने कोशिश की है जितने अच्छे से जमा सकूँ. एंड I'd love to know your comments. I'd love to know your input on it. So put them down in the comment section below, and I'll see you soon with another video. Till then, you guys take care of yourself. Keep reading, keep smiling. Love you.